Tears, tamasha and tantrum punctuated a highly charged Samajwadi Party gathering today in Lucknow. The Yadav family drama played out to a riveted audience of party workers. Look at those pictures. If Mulayam desperately choking back tears wasn't teaching the basics of leadership to his son, then his son, much like a hapless Hamlet, was seen lamenting the state of the Samajwadi Party. Mulayam Singh's brother and Akhilesh Yadav's uncle was at hand to add another theatrical strand to the production. In unprecedented style, he dramatically pulled the microphone out of Akhilesh's hands as he labeled him a liar. Look at those pictures there. They show you scenes that you will never have witnessed before. Perhaps this is the first time on national TV that an incumbent chief minister has been called a liar by a party official and virtually got away with it. Indeed, the theatrics mark a new low for the Samajwadi Party that has been unmasked as a family firm in which the principals are only too busy pursuing their own private interests at the cost of the public interest. It wasn't surprising then that Prime Minister Modi didn't waste any time today in drawing a contrast between the BJP and the Samajwadi Party, dismissing the latter as a confederacy of nepotistic modern-day rulers interested only in guarding their fiefs. The Congress and other political parties like the BSP echoed the Prime Minister's sentiment, though to varying degrees. The fact of the matter tonight is that there has been no resolution, that the people of Uttar Pradesh are the ones that are caught in the crossfire as principals of the family decide their own fortune, relegating to the sidelines the destinies of the people they hope they were going to be serving. Here's the news report. अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया, और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं. Tears and tamasha dominating the most crucial meeting of the Samajwadi Party's history. But what was initially a Chacha-Bhatija fight has become Akhilesh versus all, including his own father Mulayam, who clearly did not shy away from taking sides. मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, मुझसे उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर चुनाव लड़ूंगा. नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है, वो कह सकते हैं. लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ. उस दिन आलोचना करने वालों के खिलाफ हो जाते, तुम बन ही नहीं सकते. आलोचना सही है तो सुधारेगी, तो जो आलोचना नहीं सुन सकता है वो नेता नहीं बन सकता. But the meeting, which was supposed to resolve all the issues, has aggravated the situation further for Samajwadi Party. Well, party is still grappling with many questions, and answer of these questions will decide the future of Samajwadi Party. It's clearly the dawn of a new Samajwadi era, where Akhilesh is damned, Shivpal is hailed, Ram Gopal is ostracized, and Amar Singh is redeemed. सर आपका ऊपर समाजवादी पार्टी छोड़ने के लिए ऑर्डर है. I am not talking. Don't give this way. Please. But the SP's pain is its rival's gain, and one leader was particularly keen to cash in. एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है. बिल्कुल ठीक बात कही मुलायम सिंह जी ने. उत्तर प्रदेश के सारे ठेके, सारे टेंडर्स देने का काम, सारे भ्रष्टाचार के काफी बड़े जनक शिवपाल यादव जी हैं. तो निश्चित रूप से मास लीडर उत्तर प्रदेश में वही माना जाता है जो ज्यादा भ्रष्टाचार करे, जैसे मायावती जी को माना जाता है, शिवपाल यादव जी को माना जाता है. This is the internal affair of the political party, that is Samajwadi Party. Congress has nothing to do with that. Congress is just simply watching. अंदरूनी मामला है, लोग अपने किसी भी प्रकार से जो कुछ भी दल के अंदर की स्थिति है उसका समाधान लोग निकालेंगे. It is an internal matter of Samajwadi Party.
At the same time, we'll have to wait and see what will be the political fallout of the feud that is happening within Samajwadi Party. As Mulayam picks his brother over his son, the ruling family of Uttar Pradesh is split wide open, with the BJP looking to drive home the advantage. Is this a self-goal by the Yadavs? With Vijay Lakshmi in Lucknow, Bureau Report, NewsX. Well, let's just focus on this very unusual scenario that played out, where the uncle snatches the mic away from his nephew, who also happens to be the chief minister of the state, calling him a liar. You probably never see these scenes ever before and perhaps ever again. अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। While SP's leaders tried hard to play down the party's worst ever conflict, this is what was happening inside the scenes. Chacha and Bhatija having a bitter free-for-all. अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार से लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री झूठ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा नहीं। Let him just sink in. The sitting chief minister of the state is shoved out of the podium by his own uncle in front of his own people. अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार से लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री झूठ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा नहीं। Humiliated, Akhilesh tried to protest, but the misery continued to pile up against him. ये गुंडाई नहीं चलेगी, और जो अधिकृत नहीं है और जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, उन्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। ये विधानमंडल दल की मीटिंग है। ये देखिए, अनुशासन में रहिए। देखिए, ये गुंडाई नहीं चलेगा। 110 seconds to expose the fault lines in the SP like no other. The one big question coming out after this, has Mulayam's party reached a point of no return? Bureau Report, NewsX. Well, what are we seeing? What are we seeing even as we speak? The Prime Minister says this is an open family feud for spoils of office, and that these individuals are falling out because their thirst for power has not been slaked, even though they have been in office now for 5 years. Let's throw this open. Let's get a perspective on all of this. Ashok Tandon, senior journalist, joins us. So does Pawan Minocha of the Samajwadi Party. Mr. Minocha, is this a power grab by one family, and now the family is at each other's throats because they don't want to give up the benefits of office? मिनोचा साहब, ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कहीं पर कुछ नहीं है। एवरीथिंग। मिनोचा साहब, ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कहीं पर कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज ओके। How is it okay, sir? How is it okay? Prime Minister an uncle is pulling a mic from the Chief Minister's face. We have never seen this. How is this okay, sir? इस ओके क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नेताजी ने, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाद में अपना भाषण खत्म किया, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि हमारा अगला चीफ मिनिस्टर मिस्टर अखिलेश यादव ही होंगे। अखिलेश यादव जी ने उनसे आशीर्वाद दिया। नहीं साहब, वहां पर तो लड़ाई हो रही है। देखिए स्टेज पे क्या हुआ, उसके तुरंत बाद ये एक दूसरे से लड़ने लग गए। भतीजा, उसके बाद पैर भी छुए, आशीर्वाद भी दिए।
तो उसका क्या मतलब हुआ सर? उसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हो रहा है? आप सीएम की बिल्कुल नहीं, कोई आपने घटना नहीं है। सीएम की नहीं, आपने सीएम की अथॉरिटी एकदम इरोड कर दी है। अब वो क्या लायक रहेंगे अगर उनकी पार्टी में उनको इस तरीके से नकारा जा रहा है? तो जनता क्या कहेगी सर? वो वोट क्यों दे अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को? अखिलेश कहते हैं कि देखिए, पार्टी अखिलेश में यादव चोर को भरे जनता पड़े। नहीं, अखिलेश कहते हैं कि पार्टी में चोर भरे देखिए, पड़े। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी। अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे, तमाम ऐसी योजना, फास्टेस्ट मेट्रो, कई योजना लाए। कन्या विद्याधन को देख लीजिए, समाजवादी वेंचर योजना, लैपटॉप योजना, 17 लाख के ऊपर लैपटॉप बांटे उन्होंने। कई ऐसी योजनाएं लाए। इसी उत्तर प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करती है, माननीय मुख्यमंत्री पर, उनको फिर से वोट करेगी और माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा ही समाजवादी पार्टी के लिए नंबर 1 रहेगा। नहीं, मगर उनके चेहरे का आपने तो उल्लंघन कर दिया सर। उनको तो आपने एकदम मंच पे ऐसे इस तरीके से आपने उनके साथ व्यवहार किया है कि वो अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तौहीन किया आपने। नहीं सर, पूरा उत्तर प्रदेश का यूथ उनके साथ है। किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे नौजवान हो, हर इंसान का आशीर्वाद, गरीब मजदूरों का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। तो उनके पिताश्री उनको क्यों कहीं बोल से रहे हैं कि कमजोर आप नहीं मोदी है और साहब का- मजबूत होकर नहीं, निकलेंगे। तो उनके पिताश्री उनको क्यों बोल रहे हैं कि आप मोदी साहब का एग्जाम्पल फॉलो कीजिए? मोदी साहब कितने कर्मी हैं, कहां से आए और कहां पर पहुंचे, और उन्होंने एकदम अपना पूरा सवार लिया है पल्लू। और आप यहां देखिए सर, एट द एंड ऑफ द डे कि ये तो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपके तो सर में पावर चला गया है। चीफ मिनिस्टर के पास सारी पावर है, आज भी उनके पास सब पावर है। सारे मंत्रालय जो भी है, सारे नहीं। काम हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर लगातार काम कर रहे हैं। Mr. सर, Minocha, उनकी पावर कहीं नहीं गई। Mr. Minocha, आप the देखिए, chief पावर minister उनकी is नहीं पड़ी। saying that Akhilesh Yadav has allowed the party's position, his position as chief minister, to go to his head. He's lost his mind. He has become completely drunk with power. ये कैसा? ये कैसे चीफ मिनिस्टर है सर? चीफ मिनिस्टर बहुत मजबूत है और मजबूती से काम कर रहे हैं, संस्कारों से बंधे हैं। और संस्कारों से, क्योंकि राजनीतिक गुरु है, पिताजी है, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था। समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है, अखिलेश यादव जी की है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब पूरी तरीके से मजबूत है। Let me read out. This is what Mulayam Yadav has said about his son, the chief minister. जो बहुत उछल रहे हैं, अगर बात आई तो एक लाठी भी नहीं सह पाएंगे। I tell Akhilesh things, but he focuses on other things. Abusing people does not help. He said drunkens and goons have been added to the party. अखिलेश यादव, उन्होंने कुछ यूथ के लिए कहा है, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के लिए ऐसा कोई भी नहीं, शब्द उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है जो ये यूथ बहुत उछल रहे नहीं, हैं, उन्होंने उनके लिए। कहा है कि drunkards and goons have been added to the party. You get some power, it goes to your head. Shivpal Yadav is the leader of the masses, but you are being misled by these goons and drunkards. तो आपकी पार्टी में क्या goons and drunkards घुसे पड़े हैं सर? सॉरी सर, इस पे मैं क्या जवाब दूं? आप जवाब देने के लिए है ही नहीं तो आप क्या देंगे सर? 1 मिनट मेरी, आप 2 मिनट बने रहिए, मैं जरा दूसरों को भी लाता हूं इस डिबेट में। जीवीएल नरसिम्हा राव, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? What do you make of this? Complete erosion of the authority of the chief minister. If his own party is treating him like this, then obviously he's of zero worth. Rahul, today's speech of Mr. Mulayam Singh Yadav is a stinging criticism of the Akhilesh Yadav government, and this criticism is not coming from the opposition, and this criticism is coming from his own father and the man who made him chief minister. I think the last 2012 elections were fought under the leadership of Mr. Mulayam Singh Yadav, and Akhilesh was made subsequently chief minister courtesy Mulayam Singh Yadav. So today the father says he power has gone to his head, and he's really working with goons in the party, and both, I think, Akhilesh's camp and Mulayam Singh Yadav's camp have been trading charges for the last few days, accusing each other of corruption, of political intrigue and whatnot. I think they are washing dirty linen in public, and opposition doesn't need to really throw any kind of mud at them. They have really showcased
they have put before the public in front of television cameras the kind of misgovernance this party has done for the last 5 years. So this is an act of self-immolation. Self-immolation. Act of self-immolation by the father-son duo, and this is really, with this, I think they have run out of this campaign even from the qualifier round. Okay, they're out of even the qualifier round. A sports season, they have really knocked them out of the qualifying. They have knocked themselves out of a qualifier round, and they have no chance of even participation in this election. Okay, let me bring in Mr. Ashok Tandon. Is this a massive self-goal by Yadav and Sons? By Mulayam Singh Yadav and his son Akhilesh Yadav, have they exposed themselves as perhaps individuals who are not fit to be re-elected? Both sides are calling each other thugs. See, the thing is, the whole tussle started when Amar Singh rejoined the Samajwadi Party. Now, we all know Amar Singh very well, and he, it did a forecast that by October, November, there will be a leadership change in Uttar Pradesh. Now, since then, he has not been pulling on well with Akhilesh Yadav. Now, I understand that Mulayam Singh Yadav is under pressure from people like Shivpal Yadav, people like Amar Singh, and even Azam Khan, that they are not being given their due, and Akhilesh is arbitrarily running the state government. So, at the end of the day, what they want is that let Mulayam Singh take over again from Akhilesh Yadav, and then the whole party will be united, and we should go to the poll unitedly under Mulayam Singh Yadav as Chief Minister. Mr. Minocha. This is what Akhilesh is resisting. He said, well, my father, you gave me the power in 2012. Now, how I have done well, how can you take the power from me and we go to the poll under your leadership? That means who will be running the shot? ठीक है, let me ask Mr. Minocha. एक आदमी दलाली कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई अपने जेब भर रहा है. सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, ये शिवपाल जी कह रहे हैं, ये मुलायम जी कह रहे हैं, आपके खुद सबसे सीनियर लीडर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं. जैसे जीवीएल नरसिम्हा राव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे को तो कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं. आप अपने आलोचना कर रहे हैं, आप एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो बचा ही क्या? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है आपकी कि एक दूसरे की निंदा करने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी तो आती है. बट मैं आपको कहता हूं कि 3 नवंबर को हम शायद फिर से पुनः मिले और 3 नवंबर को आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की ताकत दिख जाएगी. जिस तरीके से क्रांति रथ की उन्होंने शुरुआत की थी 2015 से पहले, 2011 में, फिर से वो 2017 में के चुनाव के लिए फिर से 3 नवंबर को क्रांति रथ की शुरुआत करने जा रहे हैं. आपको 3 नवंबर को सभी बातों का जवाब मिल जाएगा. 3 नवंबर, ओके. I think the Congress party spokesperson wants to come in on this, Mr. Shergill. Yes, the point I want to ask you is, will you now tie up with any of these? Supposing Akhilesh now splits the party, or Mulayam decides to become chief minister and approaches you, will you sign up with these gundas, thugs, dalals, etc.? They show in every Bollywood movie. In any love triangle, trust is the first casualty. The basic trust factor in the Samajwadi Party has eroded, and the Samaj of Uttar Pradesh will never trust the Samajwadi Party again, irrespective of the outcome of the family feud. We people will be very hesitant to vote for a united banner of Samajwadi Party, seeing this theatre of conflict which is good. We people will be very hesitant to vote for a united banner of Samajwadi Party, seeing this theatre of conflict which is playing out. Number 3, what are we that naive? Amar Singh did this, so and so did this. Mr. Mulayam Singh Yadav is an experienced politician. How did he allow the situation to escalate to this level? This shows that the foundations of Samajwadi Party were very weak, and power was the sole oil which used to oil their wheels of democracy. That is what is panning out. Now today the cycle, the Samajwadi cycle has broken into spare parts and is directionless. So irrespective of the outcome, the Samajwadi Party has lost this race before even it began.
As far as the Congress is concerned, we are merely waiting and watching. I cannot comment on any future speculation, but this is an unfortunate turn of events between a father and son in a country where that bond is sacred, where mutual respect is sacred, and that should not have happened to any family for that matter. I'm sorry. Yeah, it's quite clear, Mr. Tandon, that no lines are sacrosanct for the father, son, or the other members of the Yadav family, that they will cross any line in their pursuit of power. The Chief Minister says, I am the Baap of Gundagardi. If he is the Baap of Gundagardi, then what remains? If the Supremo of the Samajwadi Party calls himself the goon of goons, then why should anyone vote for the Samajwadi Party? And this is what he is saying publicly. Rahul, the bottom line remains that Mulayam Singh Yadav has already announced his successor, which is Akhilesh. And Akhilesh will never split the party, nor will Mulayam Singh Yadav split the party. So take it from me, there will be no split in Samajwadi Party, and the successor for all times to come in Samajwadi Party is Akhilesh. The only problem is Mulayam is trying to placate his brother, his friend Amar Singh and others in the party, but not sacrificing his son's interest. So therefore, take it from me, the maximum they can do is some kind of an arrangement in which Mulayam Singh Yadav becomes the Chief Minister again till the election. So that the party fights the election unitedly. No, let me ask Mr. Minocha, Pawan Minocha, understanding. Agar Mulayam Singh Yadav ka ban bhi jaye. Yes, Mr. Tandon, even if he becomes the Supremo under which they will go to the elections, when Mulayam Singh Yadav has called himself the Baap of Gundagardi, what is he going to say? The Baap of Gundagardi is coming to the people to take a few votes? That's a bit ironic, isn't it? That is for the that is for the people of Uttar Pradesh to decide. I am trying to analyze the situation within the Samajwadi Party. तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी फाउंडेशन बहुत मजबूत है, हमारा कैडर इतना मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश की चुनाव आने पे अपने आप को दिखा के प्रूव करके दिखाएगा। नहीं, बट मुलायम सिंह साहब, आप मुझे ये बताइए मिनोचा साहब, जब कोई लीडर कहता है कि मैं बाप हूं गुंडागर्दी का, तो वो किसकी सेवा कर रहा है? गुंडों की? और कार्यकर्ता तो शिवपाल और अखिलेश जी में बट गया है, जनता की सेवा कौन कर रहा है? गुंडों की हो रही है सेवा। ना कोई कार्यकर्ता नहीं बटा है, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता है, हमारे नेता के नेता और राजनीतिक गुरु और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव है। हम उनकी नीतियों को मानते हुए चल रहे, कहीं कोई नहीं बटा है, कोई बटन नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी को 2017 में मजबूत करने के लिए हम लोग फिर से लग जाएंगे। आप दिवाली के बाद देखिएगा, विकास रथ जैसे ही चालू होगा आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि सब लोग एक हैं। मिस्टर जीवी नरसिम्हा राव। Rahul, I think people of Uttar Pradesh, I think if there are many reasons for them not to vote for Samajwadi Party, but lawlessness, Gunda Raj is Samajwadi Party government's unique selling proposition. That's their principal identity. Well, I think when Mr. Mulayam Singh Yadav says, talks about Gunda Raj within the party, he is speaking the truth. And that people of Uttar Pradesh already know about it. And that's the reason why they had decided, made up their mind to give us stinging defeat to this party. The whole fight in the family is to retain control or to remain relevant in the political party. This is not to fight or win elections in 2017. They have known months before that this would be the possibly worst defeat ever. But today, by doing all this, by indulging in this public cleaning of public, Mr. Rao, Mr. Manocha is asking you a question. Actually, they have whatever remnants of a chance they had to win a few. Okay, 1 second, Mr. Rao. Mr. Minocha is asking you a question. He says, you have had the opportunity, the people have brought in 73 MPs from the Bharatiya Janata Party. What have you done to contribute in those constituencies? That's the question that is being asked of you by Mr. Minocha, sir.
I think you will know the answer to this when the results of 2017 assembly elections come out. I think No. Uttar Pradesh will give a verdict. Sorry, sir. But answer अभी ये बताइए कि 73 सांसद दिए हैं. Okay, बात करने के अलावा उत्तर प्रदेश के लिए आपने क्या किया? Okay, very quickly, Mr. आंसर आपको दिल्ली की जनता दे चुकी है, बिहार की दे चुकी है. 224 मेरा वादा विधायक को उत्तर प्रदेश लेकर की के जनता भी आपने आपको क्या जल्दी किया आंसर है? देगी. गुंडे को, मवालियों को हमने विकास किया है, अपने लगातार प्रोत्साहन काम दिया किया है. फास्टेस्ट इसके अलावा मेट्रो देने आपने का क्या काम किया है? आगरा एक्सप्रेस ने अपने संसाधनों में देने क्या का काम विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया है आप आपने? जुमलेबाजी की बात उसी करते हैं. पैसे की अरे आप लोग उसको जुमलेबाजी की बात कैसे करते हम हैं. भ्रष्टाचार कैसे साबित करके उसकी दिखाइए. बंटवारा हो, उसको लेकर पूरा साबित करके आपके दिखाइए. अंदर ये देखिए, इनक्वायरी चल जुमलेबाजी रही से है. बातों से ये देश चल पैसे की सकता है. आज आप देश को पैसे की बंटवारा के लिए है ये झगड़ा. आपने बहुत बड़ा काम किया है. आपको बधाई, आप भारतीय सेना को बधाई, बट आप उसमें वोट नहीं दे सकते. Okay, gentlemen. कीजिए. आपको ये गरम ना हुई है, सर. 73 सांसद उत्तर प्रदेश के लिए गरम ना हुई है. इसके लिए क्या किया? अरे भाई, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है. आज के लिए बहुत है, सर. आप क्या कर रहे हो? It's okay for today. You've done enough today, sir. You've got a big stage where you did a lot of drama today, all of you. It's okay. Now let's calm down. Let's cool down. The basic fact is, and I'm going to wrap up this debate. I'm wrapping up this debate. Minocha Saab is having a hearty laugh. Yes, he understands that it is at the end perhaps just theatre. But the fact is that when the purported supremo of a party says that he's the bap of Gundagardi, and the son says that the party is packed with all sorts of strange characters who are skullduggerous, then the voter really doesn't have much of a chance. Have the father and son shot themselves in the foot? Have they done really a disservice to their own cause? We leave it at that. Points to ponder.